बस कुछ क्षणों की देरी है guys. Just wait for some time.
क्या हुआ है? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे पबजी के अंदर अगर हमें ये वाला एरर देखने को मिलता है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो एरर है हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं ये हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप जो है पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यहाँ पर हम रीट्राई करते हैं तो वही एरर हमें 10-15 मिनट बाद फिर देखने को मिल जाता है। तो अब इसको कैसे सोल्व करें, हम इसको यहाँ से काट देना होगा। यहाँ पर ये लोडिंग चलती रहेगी, अपडेटिंग जब तक इस एरर को हम सोल्व नहीं कर देते। तो यहाँ से हम इसको काटना है और काटने के बाद अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। फ़ोन की सेटिंग्स में हम जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर हमें इंस्टॉलेड ऐप के अंदर जाना है। इंस्टॉलेड ऐप के अंदर जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर हमें पबजी को अपने ढूंढ लेना है। ये रहा पबजी हमारा, इसको जो है हमें खोल लेना है। खोलने के बाद यहाँ पर आपको 3 सेटिंग्स बहुत ध्यान से देखनी है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ऐप परमिशंस, तो ऐप परमिशंस पर जाना है और ये जो दोनों परमिशंस है इनको अलाउ कर देना है। ठीक है, उसके बाद बैक लाना है और यहाँ पर आपको दिखता होगा रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज, इन तीनों पर क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। और फिर यहाँ पर आपको फोर्स स्टॉप दिखेगा, इस पर क्लिक करके ओके कर देना है। यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले ऐप परमिशंस की
अच्छा मैंने सबको ज़्यादातर लोगों को रिप्लाई दे दिया, बट मतलब बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी, ये वाली प्रॉब्लम जो आप लोग को मैंने अभी स्क्रीन पे दिखाया। तो ये प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने सोचा एक वीडियो बना देते इसके ऊपर, जब इतने सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रहे तो इसकी वजह से मैंने बोला चलो एक वीडियो बना देते हैं। तो अभी मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग को वो एरर कहीं आ रहा है, लॉगिन करने के टाइम आप लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे हो तो क्या करना है। तो चलिए अभी मैं आप लोग को बताता हूँ। उससे पहले मैं एक प्रीमियम ग्रेड मेरा 29 हो चुका है, तो एक 30 ग्रेड मेरे को खोलना है, तो देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है। और मेरे को है ना M4 बैग या तो फिर ये नेड, ये तीनों में से एक चाहिए। M4 बैग या नेड, ये तीनों में से मुझे एक मिल जाए तो यार मैं सही है, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। और नेड मिल गया तो एकदम मतलब बोले तो खतरनाक। तो अभी देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है। तो ये था गारंटेड रिवॉर्ड में, और हम लोग को M416 मिल गया। तो M416 काफ़ी अच्छा गन है, मतलब स्किन काफ़ी अच्छी है ये वाली गन की, बट मेरे पास नेड काफ़ी यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये वाली M4 निकल गई, काफ़ी अच्छी बात। तो ठीक है, ये चीज़ हो गई। अभी मैं आप लोग को बता देता हूँ, जैसे कि आप लोग लॉगिन कर रहे हो तो आप लोग को ये एरर आ रहा है, अनेबल टू कनेक्ट टू दी सर्वर, प्लीज ट्राई अगेन अ डिफरेंट नेटवर्क और गारंटेड वाईफाई एक्सेस टू दी गेम योर लॉगिन। ओके, यही सब सारी चीज़ें एरर कोड आ रहा है। और तो ये चीज़ को कैसे सॉल्व करना है, देखो तो एकदम सिंपल सा मेथड है इस चीज़ के लिए। जैसे कि आप लोग सिम 1 चला रहे हो तो वहाँ पर आप लोग को दिया गया है कि आप हेलो कर तो यार उनको यार कि नहीं यार आपका जो चल रहा है ये फिक्स हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, DNS सर्च करना पड़ेगा। जैसे कि आप DNS लिखना है आपको, अगर कहाँ DNS है पता है तो आप सीधा जा सकते हो। मेरे को पता नहीं तो मैं DNS सर्च कर लिया तो मेरे को प्राइवेट DNS वाला जो ऑप्शन मिल गया, तो मैं इस प्राइवेट DNS जो ऑप्शन है इसके अंदर जाऊँगा। तो इधर देखिए 3 ऑप्शन मिलेगा आपको, एक है तो ऑफ, एक ऑटोमेटिक और एक प्राइवेट DNS पोस्ट नेम। ठीक है, तो आपको थर्ड ऑप्शन करना है, तो जो बेसिकली ऑप्शन है थर्ड में आता है। तो इसके अंदर क्या लिखना है आपको, DNS लिखना है। जो चीज़ लिखना है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो आप उधर से देख के लिख दो अगर वीडियो को फॉलो नहीं कर पाए तो। और लिखने के बाद आपको सिंपली सेव में टैप करना है, और सिंपली यार इसको बैकग्राउंड में रख के आपको क्या करना है, गेम के अंदर जाना है, इधर ओके दबा देना है। बस देखना आपका गेम ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। देख सकते हो जैसे कि मेरा गेम भी देख सकते हो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो रहा है धीरे धीरे। तो थोड़ा टाइम ले लेते हैं, एंड तक देख लेते हैं क्या होता है। तो इधर देख सकते हो मेरा गेम लोडिंग कंप्लीट हो गया एंड मैं गेम के अंदर आ गया। आई होप यार ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जिनको ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाटा। Urban Company Big Home Rush. Check the app for exclusive deals every day. Ends 15th August. (30초) 남았습니다.
टेक में जो आपका गेम क्रैश हो रहा उसका सबसे पहले चीज़ आपको जो करनी है अपनी पीसी में आना है। दिस पीसी में आइए, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाना है आपको और यहाँ पे आपको चेक कर लेना है ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है। यहाँ पे सिस्टम टाइप में आपको 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम 64 दिखा रहा है, तो मेरा 64 बिट है और आपके यहाँ पे 64 या 32 बिट जो भी दिखा है आप यहाँ से चेक कर लेना। उसके बाद आपको करना क्या है, ब्राउजर में जाना है आपको, यहाँ पे ऊपर में रहेगा तो आपके पीसी में जो भी रहेगा 32 बिट हो तो आपको 32 बिट को डाउनलोड करना है और 64 बिट हो तो 64 बिट को डाउनलोड करना है। मेन प्रॉब्लम आपका यहीं पे फेस हो रहा है, आप यहाँ पे गलत वर्जन डाउनलोड कर लेते हो, इसी वजह से आपका क्रैश वहाँ पे शो करता है। डाउनलोड तो कर लिए आप, उसके बाद आपको जो करना है वो मैं बता देता हूँ। ब्लू स्टैक में सेटिंग जो रखनी है आपको वो सेटिंग आप और अपने पीसी के स्पेस के हिसाब से आप इसमें सेटिंग, यहाँ ब्लू स्टैक को ओपन कर लिए हैं और यहाँ पे वर्जन आप चेक कर लेना, जो लेटेस्ट वर्जन होगा ना उसी को आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे अभी लेटेस्ट वर्जन ये वाला है तो आप चेक कर लेना। सेटिंग में आके आपको यहाँ पे मेनली जीपीयू को उतना यूज नहीं करता, तो जिनके पास जीपीयू है तो उससे भी कोई खास फर्क इसमें पड़ने वाला है नहीं है। ये नॉर्मल आपका सीपीयू का ज़्यादा यूजेज करता है तो इसमें जीपीयू का उतना प्रेफरेंस नहीं देता है, तो आप जिसका हाई भी है उसमें भी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है, तो लो पीसी वाले ही सेटिंग सबको करना पड़ता है। तो आपको परफॉर्मेंस में सीपीयू अलॉटेड जो रहेगा तो आपको कोर में यहाँ पे हाई पे रख ले, देख ले आपका पीसी में कितने कोर है। कोर देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा टास्क मैनेजर में और यहाँ पे आपको कोर दिखाई दे देगा आपके में कितने कोर है। सीपीयू में जाएंगे ना आप, तो यहाँ पे मेरा 6 कोर है तो यहाँ पे मैं 4 कोर को अलॉट कर लूँगा। आप भी यहाँ पे चेक कर सकते हो आपके में कितने कोर है, उसके हिसाब से आपके मान लीजिए 4 कोर है तो यहाँ पे 3 सेलेक्ट कर ले, क्योंकि हाई पे चलाएंगे तो फिर और पीसी आपका लैग करने लगेगा। और रैम कितना है आपका मेमोरी, अपने हिसाब से रैम भी सेट कर ले। आपके में अगर 1 GB है तो 1 GB कर सकते हो, कस्टम भी दे सकते हो आप। 1 GB है तो यहाँ पे 500 में दे देना आप, 8 GB है तो 4 GB दे देना, क्योंकि मैक्सिमम में 4 GB तक ही जाता है। और परफॉर्मेंस मोड में आपको हाई पे दे सेट कर देना है और यहाँ पे आपको इनेबल हाई फ्रेम रेट कर देना है और इसको 90 पे सेट कर देना है। बस इतना सा काम करिए। और एक सेटिंग आपको इधर भी करना पड़ेगा ग्राफिक्स में। आपको पता ही है कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि आपका जीपीयू को यूज नहीं करता है, तो डायरेक्ट एक्स पे रखेंगे तो आपका यहाँ से भी क्रैश हो सकता है। इसको लो से लो सेटिंग देना है आपको, तो ओपन जीएल पे कर दे इसको, इंटरफेस रेंडर को ऑटो पे कर सकते हो और ये टीसी को इसको डिजेबल भी कर सकते हैं आप। मैं तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा कुछ फ़र्क देखने को मिलता नहीं है। इतना सेटिंग आप कर दोगे आपका गेम कभी भी लैग नहीं होगा। और यहाँ पे डिवाइस प्रोफाइल में आप सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा रख सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे आसूस ROG 2 भी रख सकते हो। ये दोनों में से कोई भी रख के आप चेक कर लेना, आपका प्रॉब्लम फेस नहीं करने को मिलेगा। और नेटवर्क प्रोवाइडर में आप एयरटेल कर सकते हो, क्योंकि जियो के नेटवर्क पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया बता देता है कभी कभी, तो एयरटेल आप स्विच कर लेना। इतना सेटिंग करने के बाद आपका गेम कभी भी लैग नहीं होगा। तो और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप मेरे को, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा आपके लिए। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय गेमर्स। और जाते जाते जो आरपी का हमारा गिव अवे चल रहा है उसमें ज़रूर पार्ट ले और लाइव पे आके चैट करें। आपको जिनके भी चैट सबसे ज़्यादा होंगे इस इवेंट पीरियड में उनको ये रोल पास मिला जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय गेमर्स। Want to know how I use the awping Breathe Clean Daily Nasal Wash? It's simple. And we're done. awping Breathe Clean, your daily nasal wash.
It is NA all day. Who's left? Right, like what's left? Who's left standing? BGMI, but he's got the charge. Tens has the blade to go. Oh! Very out of the sky. You know, you can see it, right? You can see it on the stage. You can see it in the server. These guys are all vibing. The Koreans are like silent assassins. Welcome to Decoded. We break down the best strats and plays from the Valorant Champions Tour to help you in your ranked games. Today we're going to be looking at how to execute a perfect retake strategy with an example from Masters Reykjavik winners, Sentinels. Who else? But first, look, what is a retake, you may be asking, and you know what, great question, you're hitting the nail on the head there. A retake is a play where the defending team manages to regain control of the site and score a defuse after the spike has been planted. It's a popular strategy for defenders to back off of a site when the attackers rush in and play for a retake rather than fighting them immediately. This gives the defenders time to group up for a more even team fight. In this particular example from the upper bracket here at Masters Reykjavik, Sentinels met Korea's Newturn Gaming, who had surprised the world with their impressive run so far in the tournament. And if you watch previous episodes of Decoded, you'd be in the know, and you might remember how Newturn are known for their aggressive and coordinated pushes onto the sites. Coming into this match, Sentinels of course knew what to expect, and came up with a plan how to counter it. As we break down this round, we'll be digging into some of the essential team play concepts to bring into your own games, including how to play a patient defense, assess teamfight risks, and manage resources efficiently. Keep an eye out for all of these tips as we work our way through it, and you'll be executing a retake like a pro. Let's get into it. Newturn begin the round with all 5 players stacked outside the A side of the map. Sentinels anticipate this and start setting up for a punish. Newturn push through Zom's smoke and the gravity well at the door of A lobby. Lakia is spotted by Shazam's recon bolt. Right after, Lakia is able to tag Shazam with his own L drone, giving Newturn visibility on his location as he retreats into the A site. Now, Newturn feel like they have enough intel to continue onto the A site. They set up a split push by sending 3 players down A long and 2 players with a spike to short. Sick rotates over to A site to support Shazam, but the other members of Sentinels stay put. Sentinels are careful to not over-rotate too early here, as they've only spotted 1 or 2 members of Newturn at this point. Newturn are now ready to enter the site. Suggest kicks things off by tossing in a paint shell to the corner of A short. Sick mollies the A short entrance in response to keep him out. But it's going to take more than that to slow down Suggest. He bounces over the molly with his blast packs, landing safely onto A site with his showstopper locked and loaded in hand. But Sentinels are nowhere to be found. That's because they've opted for the retake strategy already this round. Rather than risk a 2v5 fight, Sick and Shazam hang back at the defender's spawn, giving control of A site to Newturn while they wait for the rest of the teammates to arrive for a group push. High-level Valorant is all about risk calculation. On the surface, it may seem strange that they're allowing Newturn a free spike plant, but in the bigger picture, that's a smaller price to pay than losing 2 players in an early, unfavorable fight. Now, Newturn get the spike planted and Sentinels group up in spawn. The retake's about to begin, and it's already a 4v5 in favor of Sentinels after Shazam scored a lucky pick by spraying through a smoke. Sentinels kick off their retake by activating a gravity well on top of the spike, attempting to catch whoever planted it. They hook Suggest in, setting up for an easy kill for Sick in heaven. From this position, Sick can't see any more opponents, but his teammates in A tunnel have a read on Allow. He revealed his location in Hell by tossing a smoke from there just a moment ago. They communicate this to Sick, who goes for a crazy play to catch Allow off guard. Sick curves a flash into Hell, drops down immediately, taking Allow out with a headshot. However, Allow manages to take Dapper down with him in the scramble. Sentinels aren't concerned though, as they still have 2 players over Newturn. Now, we've seen it happen on our end, but let's check in with Shazam to hear what was going through his head during this play. Zoms immediately uses his Astro ult to cut off the chokes of the site. So they have to get the bomb down, and now they have to decide if they're going to sit in empty corners of the site or if people are going to play outside the site. It kind of like splits them off, and the retake is set up immediately. Everyone rotates in. I leave Heaven to set up a recon dart, scan who's on site,
Zoms has a gravity well on default that gets stick to kill, and then he usually flashes out of heaven. And now the recon dart's cleared every corner of sight. Stick gets the kill under heaven. We know the remaining two have to be outside of the site because they were behind Astra's ultimate. It's just like protocol to follow for these retakes, and it was good on me and Stick to recognize that, you know, they're committing to A site. You need to give up control and play retake in that scenario. You shouldn't try to go for a kill and lose man disadvantage, because as you can see, like, everyone, and that's how the round played out for us. The remaining new turn players Solo and Lakia split off earlier to check for lurkers. They now hold their defensive positions and wait for sentinels to approach. Zoms and Shazam locate Solo and swing the corner together to increase their chances of winning the fight. Solo dies to the hands of Zoms, but he's able to take Shazam out with him. The decision to peek this corner as a pair is another great example of Sentinel's resource management and awareness. While they could have gone for a 1v1, they knew that sending two players would increase their chance of eliminating him, even if it meant training one player. In their current position of a man advantage, trading is extremely valuable as it decreases Newturn's potential to make a comeback while maintaining their overall lead. When attempting a retake, always be aware of what resources you have over your opponents and how you can spend those resources to maintain an advantage. As the last man standing for Newturn, Lakia finds himself in a tricky spot. He waits patiently for Sick to start defusing and is able to score the kill. But little did he know, Tens was waiting right around the corner ready to strike. Tens finishes it off, scoring the final kill and completing a perfect retake with resources left to spare. And that's the play. Now that we've broken it all down, let's take a moment to recap what we've learned. Patience is a virtue for every great player. Don't get too jumpy on defense and rotate early. Sometimes it's safer to wait things out until you've got more information. In the heat of the moment, managing risk is key. Sometimes it's best to fall back on a site and play for retakes rather than ending up in an unfavorable fight. Always be aware of what resources you and your opponents have. When you're in the lead, don't be afraid to spend some of those resources to keep your advantage going. Try bringing these pro strats into your next ranked match and see how your game improves. Thanks for checking out this episode of Decoded. Be sure to tune in to the VCT, of course, to learn more pro strats to bring to your ranked games. For upcoming matches and schedules and all the information you may ever need, head over to valorantesports.com. And that's it for Decoded 2021. Check out the full Decoded playlist for all